chemistry, basics of organic chemistry. There is only one small topic that is remaining. We'll do that and we will do the questions on that. And then we will start the chapter hydrocarbons. Okay. So please write types of organic reactions. Also, guys, the focus mode is on. You can turn the cameras on. Types of organic reactions. Here, number one, we have substitution reaction. In substitution reaction, how to identify? You have, if you have AB and there is some reagent C, and one of the atom, it is replaced by another atom. This is known as substitution reaction. Okay, so for example, you have CH3Br plus OH negative. Now CH3OH, Br is replaced by OH, and you get Br negative, right? So here OH is replacing the Br. And if I talk about the type of bond which is being broken, so one sigma bond is broken between CBr, hai na? If there is breaking of one sigma bond, so one sigma bond breaks in substitution reaction, and one sigma bond is formed. Second, we have elimination reaction. No, in elimination reaction, we have AB, and this AB, it has some XY attached to it. And generally, elimination reaction, it happens in the presence of heat. AB forms a double bond, and XY leaves, making a bond like this. Okay, so we will just concentrate on the substrate part, that is the AB part. So अगर हम AP part में देखें तो दो sigma bond is breaking, two sigma bond breaks, and pi bond is formed. ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में अगर आप देखते हैं कि pi bond is getting formed, then please remember that it is going to be elimination reaction. Now, an example of elimination reaction will be something like this. Let's suppose we have CH3, CH2, Br, and in the presence of a base and some heat, what will happen? We will get CH2 double bond CH2. So if you look at the change, what has happened from this carbon atom, hydrogen is removed, and from this carbon, the Br is removed. So HBr is being removed. It is an elimination reaction. A very easy way of identifying whether something is elimination or not, just look in the product. If there is, look at the reactant, there is sigma bond, and product में pi bond आ जा रहा है, that means it is an example of elimination reaction. Just the opposite of elimination reaction is addition reaction. Okay, so what happens in addition reaction? In general, you will have A double bond B. This will react with some reagent XY, and this is going to give you A, B bonded to X, and this is bonded to Y. In terms of bond, pi bond breaks and two sigma bond is formed. Makes sense, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. An example, if I look at an example, CH2 double bond, CH2 plus water, and this happens in the presence of an acid. What happens? One of the, see, water को आप कैसे लिख सकते हैं? HOH, right? तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ऑक्सीजन आ जाता है. So you will have something like this. You'll have CH3 bonded to CH2 and then OH.
Now the last one that we have is rearrangement reaction. Okay. चलिए please write till here and let me know when you're done. Rearrangement reaction को थोड़ा डिटेल में हम लोग को देखना है. That is like just let me know once you're done till here. Rearrangement reaction टॉपिक तक अगर कर लें then please raise your hand. Khadija, Udeja, Rushita, please have your cameras on. Yes, Khadija. Khadija, please turn your mic on. Khadija, are you there in the class? Raise your hand once you're done. So can you show substitution reaction? Waiting for Amna and Khadija. Just waiting for Amna though. Khadija तो नहीं class में. Amna, just give me a second, guys.
Okay, thank you for waiting, guys. See, now rearrangement reaction, ध्यान से देखिएगा. There is a question in your textbook, उसी को हम explain करते हुए आपको समझा देते हैं. So you have CH3 whole thrice carbon CH2OH plus HBr. It gives CH3 whole twice CBr, and then we have CH2 CH3. कितने कार्बन में? 3 4 CH2 and CH3 plus water. ठीक है. First of all, I will make this compound. फिर आप लोग को see this structure. ठीक है. So you have CH3, 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 3 CH3, then 1 carbon, then CH2, and then here we are having OH plus HBr. It is giving you guys CH3 whole twice. You have 2 CH3s, and then this carbon atom itself, it is having Br. These are the 2 CH3. Here is the Br. Then you have CH2, and then you have CH3. Okay, so this is the compound. Okay, this was the initial compound. I think you can see the change in the bonding, right? You can see that this is यहाँ पे 3 CH3 थे, अब यहाँ पे 2 CH3 हो चुके हैं, and plus water plus H2. Now obviously there is a change in bonding. The complete, I mean the molecule has changed. ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ OH की जगह Br आ गया है. That's not the only change happening. Right, here we had a 3 degree carbon, और यहाँ पे इस structure में there is no 3 degree carbon, so obviously there is some internal changes happening within the compound itself, है ना, within the compound. उसी को rearrangement बोलते हैं. When a molecule it undergoes reorganization of its constituent parts, उसके parts इधर से उधर लग जाते हैं, उसको rearrangement बोलते हैं. अब ये हो कैसे रहा, उसको जरा ध्यान से देखने वाली बात है. Now you have to identify what is the electron rich source. उससे पहले, इलेक्ट्रॉन रिच से पहले आप थोड़ा HBr को देख लेते हैं. बिटवीन H and Br, which is more electronegative, guys, tell me. कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन और Br के कंपैरिजन में? Quickly, Br. Very good. So Br will be delta negative and hydrogen will be delta positive. ठीक है. Now determine the electron rich part in this molecule. Is there any electron rich part in this molecule? क्या कहीं लोन पेयर वोन पेयर होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब लोन पेयर हो, या फिर क्या हो, पाई बॉन्ड हो. ठीक है, इन दोनों, या फिर नेगेटिव चार्ज हो. और ऊपर आ जाइए. टेल मी, इज देयर एनी लोन पेयर? पाई बॉन्ड तो नहीं है, लोन पेयर है कहीं पे? देखिए जरा, यस और नो, टेल मी गाइस. चैट में जल्दी जल्दी बताएं, यस और नो. विल गिव यू गाइस 10 seconds, नॉट मोर देन दैट. यस और नो, टेल मी, इज देयर एनी लोन पेयर इन दिस स्ट्रक्चर? 10 9 8 6 7 5 4 3. आके बन रिश्ता has answered, nobody else has answered. yes और no बताना है आपको. yes और no तो बता सकते हैं ना कम से कम. 4 3 2 and 1. See here guys, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेल मी गाइस. ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो भाई. 6 ना, और 2 बॉन्ड बना रही है, राइट. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के लिए, और बाकी 4, बाकी 4 हाँ सो रहे हैं क्या आके बाप हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई ये. ठीक है, तो लोन पेयर है, यानी देयर इज अ इलेक्ट्रॉन रिच साइड. सो दिस ऑक्सीजन लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव द बॉन्ड टू Br. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास नेक्स्ट जो आपको मिलेगा ना, वो कुछ इस तरह का चीज मिलेगी. You have oxygen with 2 hydrogens and a positive charge. ठीक है, प्लस Br नेगेटिव वहां से निकल जाएगा, Br नेगेटिव. ठीक है. Now as soon as you see this part ना, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल पुल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड लीव, एंड इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन. एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो दिस इज CH2, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव मिल जाएगा आपको.
क्या इतनी बात समझ में आई? Yes or no, please tell me guys quickly. All of you understood Yes, till sir. here? Yes or no? रिश्ता समझ में आया? Yeah. Yes, sir. यस, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम सी हियर ऑल्सो वी हैव CH3, यहाँ पे भी आपके पास CH3 है और यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, ठीक है। एंड हियर वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। नाउ द बॉन्ड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? टेल मी गाइस, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? आमना, आपका आंसर क्यों नहीं Negative. आ रहा है? आमना, खुदेजा इज आल्सो नॉट आंसरिंग। खदीजा तो बहुत देर से पूछ रही नहीं। आमना, एम आई ऑडिबल? आमना का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, फाइन। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? टेल मी गाइस। हाँ रिश्ता, आपके क्या है चार्ज इलेक्ट्रॉन में? Negative. नेगेटिव। इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है? Yes, sir. तो फॉर अ सेकेंड, कितना? फॉर अ सेकेंड कैन आई से दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव हियर? फॉर अ सेकेंड ऐसा हो सकता है ना? देर आर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, Yes, है sir. ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोबेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल कुछ को कहीं भी भेज रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एंड वहां पे पॉजिटिव, तो उसको पुल करके एक सेकंड के लिए कुछ इधर आ सकता है मॉलिक्यूल, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। The CH3 here is as it is, the CH3 here is as it is, the CH2 will get a CH3 group, and जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, करेक्ट है? Yes, sir. यहाँ पे आप बताइए, दिस कार्बोकेटाइन, दिस कार्बोकेटाइन इज कनेक्टेड टू कितना कार्बन डायरेक्टली? ये कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली? 2. 1। भाई कैसे देखते यार आप लोग? 1 है ना रिश्ता? ये कार्बन का तो एक ही बॉन्ड है सिर्फ कार्बन के साथ ना, दिस इज 1 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस Yes. कार्बोकेटाइन? कितने कार्बन से कनेक्टेड है? Uh, 3. 3। वेरी गुड, ये साकिब करेक्ट। सो इफ इट इज 3, इट इज कनेक्टेड विद, दैट मींस इट इज 3 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल? बोलिए, विच इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री और 3 डिग्री? 3. 3 degree. 3 डिग्री ना। अच्छा, अब यानी कि जो भी मॉलिक्यूल 3 डिग्री बन चुका है, क्या वो वापस 1 डिग्री आना चाहेगा? No, इट sir. वोंट, राइट? राइट। सो अब धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, ऑल द 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस, ऑल द मॉलिक्यूल विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है? धीरे धीरे, और धीरे धीरे तो नहीं होगा, बहुत फास्ट होता है, बिकॉज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत सारे बच्चों को ये भी लग सकता है कि सर Br नेगेटिव भी तो है, Br नेगेटिव यहाँ पे क्यों नहीं अटैक कर दे रहा है? Br पे जब नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक है ना? इट कैन ऑल्सो अटैक ना, Br नेगेटिव, तो इट इज रोमिंग हियर एंड देयर, why it can't attack the CH2 positive there? So the reason it cannot attack, or rather it attacks, but वो लेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज इस पॉजिटिव चार्ज के पास जो कंपाउंड में ही इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी मोर नियर ना, ये इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा नजदीक होंगे। ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन क्विकली, वेरी फास्टली, ठीक है? एंड दिस विल रैपिडली मूव एंड इट विल रीअरेंज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, CH3 एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ग्रुप हो रहा है ना। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, देन द Br नेगेटिव, अब नाउ बिकॉज इट इज स्टेबल, अब इसके आगे कहीं और जाएगा नहीं, नाउ द Br नेगेटिव कैन इजिली अटैक on this positive charge, and we will get the product that is mentioned, CH3 CH3 Ca, CH2 CH3, और यहाँ पे Br लग जाएगा, right? And this is the compound we have got. So what is happening here? In rearrangement reaction, a molecule undergoes reorganization of its constituent parts. All of you guys understood this? Yes or no? Please tell me. हाँ या ना बताएं Yes, guys, सब समझ में आया? ओके। yes, sir. Yes, sir.
प्लीज रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग. समझ समझ के लिखिएगा गाइस. द मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Guys, please raise your hand once you are done. रिश्ता हुआ नहीं है आपका? Sir, I'm just drawing the structures. अच्छा अच्छा, कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए. चलिए 1 2 3 करके बताइए जरा. अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन. अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बन रहा है तो एलिमिनेशन. पाई ब्रेक होके सिग्मा बन रहा है तो व्हाट? एडिशन. और फिर अगर कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स भी है, फोर्थ वाला ना थोड़ा सा सवाल गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है? तो दिल में मत लिखिएगा. देखिए यहाँ पे 3 4 5 कार्बन, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 कार्बन दे दिए, ठीक है ना? तो ये सवाल गलत है. ऑल्दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट, ये हम बता देते हैं. अगर आया ना तो रीअरेंजमेंट लिख दीजिएगा. अदरवाइज द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग इन एनसीईआरटी. ऐसे हवा में से एटम नहीं आ सकते ना. ABC बताइएगा एंड सेंड द आंसर इन द चैट प्लीज.
यस अर्शिता करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, बाकी देखिए। Yes, Rishita, second is also correct. Yes, Akib, yes, all three are correct. Very good. लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा क्या रिशिता? Sir, is it elimination? हाँ, इट इज एलिमिनेशन। ठीक है, आई थिंक आइडेंटिफिकेशन इज क्वाइट इजी ना, कि बी आर की जगह एस एच आ गया, दैट इज राइट, इज सब्स्टिट्यूशन। नाउ पाई इज ब्रेकिंग, तो क्या हो जाएगा? पाई ब्रेक हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? सिग्मा इज फॉर्मिंग, सो इट विल बी एडिशन। हियर व्हाट इज हैपनिंग? द बी आर एंड एच इज गोइंग, यहाँ से बी आर निकल गया, यहाँ से एच निकल गया, so what we can say, sigma is breaking and pi is forming, so it will be elimination. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट एक बात बताइए गाइस, आई एम सेइंग अ फ्यू थिंग्स, है ना, आई एम जस्ट सेइंग अ फ्यू वर्ड्स। आप ये बताइएगा कि ये आपके टीचर ने कभी स्कूल में कराया नहीं कराया, डिस्टिलेशन इन दिस चैप्टर? रशिता, डिस्टिलेशन कराया इस चैप्टर में? We didn't start this chapter. अच्छा, नो, अच्छा, आकिब आपके इसमें नहीं कराया गया? ओके, एंड चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, चैप्टर है स्टार्ट नहीं हुआ ही। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप लोगों का कब एग्जाम वगैरह कब है आप लोगों का? सर अभी चल रहे हैं मेरे। January. जनवरी में फुल एग्जाम है पूरा? Sir, हमारा unit test, it was supposed to be like last week, but they cancelled it, so we have it on January, और फिर pre-boards है and then annual exam. जनवरी में क्या है, प्री बोर्ड्स है? Yeah. सो प्री बोर्ड में सारा सिलेबस आएगा या फिर कुछ पार्ट आएगा? So the whole thing will come. तो कैसे कम, क्या क्या बचा हुआ है आप लोग का? Yeah, 2 चैप्टर्स? बहुत बचा हुआ है. बहुत बचा हुआ है? We only did redox reactions from the second book, and we didn't complete the whole first book either. अच्छा, फर्स्ट बुक में क्या इक्विलिब्रियम नहीं किया है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया, क्या नहीं किया? We started thermodynamics. अच्छा,
खैर, अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का वो है तरीका, वो थर्मोडायनेमिक्स अगर चाहें आप ना तो आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट टफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद इट बिकम्स अ बिट इजी, रिएक्शंस वगैरह देखने को अगर आपको आ जाए ना तो हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स नॉट वेरी, इवन फॉर दैट मैटर इक्विलिब्रियम भी आप लोग अगर शायद स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो, लेकिन इक्विलिब्रियम को भी दिस जस्ट एक सोचने का तरीका होना चाहिए, वो इंट्रोड्यूस जब हम करा देंगे तो थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, इक्विलिब्रियम, बोथ ऑफ दीज थिंग्स, देयर इज ओनली वन लिटिल लिटिल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे ना अगर, देन द होल चैप्टर विल बिकम इजी। ठीक है, सो दोज आर नॉट वेरी टफ चैप्टर। अब इसमें क्या है ना, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईच एंड एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, और ईच एंड एवरी, फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट हैज नो रिलेशन विद द रेजोनेंस, है ना, दोनों अलग अलग है बिल्कुल, राइट। ऐसा नहीं कि आप एक कंसेप्ट से दोनों को समझ सकते हैं, दोनों के लिए आपको अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अब जैसे हाइड्रोकार्बन हम लोग स्टार्ट करने वाले, सो इन हाइड्रोकार्बन वी आर गोइंग टू बेसिकली लर्न अबाउट एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, ये तीन, उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेंजीन। बेसिकली दीज आर द फोर मेजर थिंग्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, फोर मेजर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नाउ इन एल्कीन, इन सब के बारे, इन सब के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब एल्केन के मेथड प्रिपरेशन सारे अलग होंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के बीच बीच में कुछ और टॉपिक्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कॉन्फॉर्मेशन एक टॉपिक है, उसके बाद है सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, उसके बाद है एरोमेटिसिटी। ठीक, कॉन्फॉर्मेशन इट इज रिलेटेड टू एल्कीन, सिस ट्रांस इज रिलेटेड टू एल्कीन, एरोमेटिसिटी इज रिलेटेड टू बेंजीन। ठीक है ना, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इधर उधर से आएंगी, बट ओवरऑल यहाँ पे है ना, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा, रिएजेंट याद करना पड़ेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही चीज लेकिन ट्वेल्थ में आपके लिए आसान हो जाएगी, बिकॉज यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इन हाइड्रोकार्बन्स देयर इज अ क्लासिफिकेशन दैट वी हैव प्रीवियसली डन, उसी को हम एक बार बस रिपीट कर देते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं और उसको किस किस तरह से डिवाइड किया गया। सो इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, तो स्कूल में आपका इक्विलिब्रियम अभी नहीं हुआ है ऋषिता? Nice, sir. आके व्हाट अबाउट यू, इक्विलिब्रियम इज डन इन Done, स्कूल? sir. Yes, sir. अच्छा, कैसा इक्विलिब्रियम आपका, समझ में आया आपको? कुछ नहीं आया सर। कुछ भी नहीं आया? इक्विलिब्रियम तो मतलब बड़ा ही आसान चैप्टर है, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, जिसको थर्मोडायनेमिक्स भी वैसे ही, इक्विलिब्रियम भी वैसे ही बिल्कुल। See, so hydrocarbons can be divided into two major categories. One is acyclic. Acyclic मतलब which is open chain structure. And then we have ring वाले जिसको हम cyclic बोलते हैं, right? विद्या cyclic, हम नहीं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको cyclic बोला जाता है। Now in acyclic we have two major categories. acyclic में एक आते हैं आपके पास so in acyclic you have saturated and then you have unsaturated. So in saturated we have only one, that is alkane. अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है
CnH2n+2. Alkene has a general formula CnH2n. Alkyne has a general formula CnH2n-2. Now when we talk about cyclic, तो cyclic में आपके पास दो होते हैं. There are two major categories in cyclic also. एक होता है आपका एलिफैटिक, ठीक है. सो एलिफैटिक इज बेसिकली एनीथिंग विच इज जस्ट रिंग. और एक होता है एरोमेटिक. तो एरोमेटिक के अलावा जो भी हो ना, एरोमेटिक क्या होता है वो समझाते हैं. एरोमेटिक जहाँ पे आपको अभी समझने के लिए, इफ यू हैव बेंजीन रिंग इट विल बी एरोमेटिक. एंड अगर बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपली यू हैव साइक्लोहेक्सेन लाइक दिस और साइक्लोपेंटेन लाइक दिस. ऑल ऑफ दीज आर एलिफैटिक, ठीक है. एलिफैटिक के लिए बारे में एक चीज जान लीजिए, इसका भी जनरल फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी CnH2n. ठीक है. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. ठीक है. राइट नाउ यू विल रिमेंबर व्हाट इज एरोमेटिक. एनीथिंग विच इज बेंजीन दैट इज एरोमेटिक. ठीक है. इसके डिटेल आएगा जब हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको ना एक चीज समझा देते. यू मे हैव हर्ड दिस वर्ड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. बट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, प्लीज सी. सैचुरेटेड का मतलब इन जनरल क्या होता है, कोई बता सकता है ऐसे ही? आम लाइफ में जब हम बोलते हैं ना यार पढ़ पढ़ के सैचुरेशन आ गया, क्या मतलब होता है सैचुरेशन का? एनीवन गाइस? Uh, it's like it's fully dissolved or फुल something फुल like हो गया that. है ना. हाँ फुल हो गया मतलब ना, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता. राइट. मेक Yes, सेंस sir. है ना. सो इफ आई टॉक अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसा लिख सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट हैव एनी मोर हाइड्रोजन्स. ठीक है. कैन नॉट हैव एनी मोर हाइड्रोजन्स. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं बताइए? 3, अरे चार. 4, चार आ सकते हैं ना. अच्छा, दो कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं दोनों के अंदर? तीन तीन, 3. है ना. Yes, sir. है ना. तो इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता. दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट सैचुरेटेड. अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड, इसमें लिखिएगा अनसैचुरेटेड, यानी कि इसमें हाइड्रोजन फुल हो चुका है ना सैचुरेटेड वाले में. हाइड्रोकार्बन कैन हैव मोर हाइड्रोजन्स. ठीक है. कैन हैव मोर हाइड्रोजन्स. अब जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो दोनों कार्बन पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन. बट दो कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6 हाइड्रोजन रखने की. अभी कितना रख रहा है ये? 4 हाइड्रोजन. डज इट मेक सेंस? ये सुनो प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. सिंपली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रख रहा है. राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन. ये आके आपकी छुट्टी कब रहती है? सैटरडे से सैटरडे को रहती है छुट्टी? नहीं सर, टेस्ट है. अरे, पूरा दिन टेस्ट है? सॉरी, एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा स्कूल.
तो कुछ सिर्फ एग्जाम देने के लिए ना? हाँ शायद। अच्छा ऋषिता, व्हाट अबाउट यू? So back sports practice. स्पोर्ट प्रैक्टिस है, पूरे दिन है? I mean नहीं, but वो competition है सैटरडे को. अच्छा अच्छा, एक और चीज, सैटरडे संडे आप लोग कोई क्लास करते हैं क्या? कोई क्लास होती है आप लोग की सैटरडे संडे? यस 2 सर। क्लासेस सर. 2 क्लासेस हैं? एक जेई और फिर नॉर्मल क्लास सीबीएस. अच्छा, कितने बजे है? एक 5 to 6:30 and then 7:30 to 9. UAE time. 5 to 6:30, 6:30 to 8. What about you, Akif? सेम टाइमिंग सर। Okay. After this, please write the topic alkenes. In alkenes, we will first of all start with the method of preparation of alkene, MOP of alkenes. ठीक है, alkenes के बारे में एक चीज लिख लीजिए, all carbons are sp3. ठीक है, सारे कार्बन sp3 होंगे तब alkane हो जाएगा. ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkenes. ठीक है, देयर इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन्स आर sp3. ठीक है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए. So in method of preparation of alkenes, we'll write first of all, A is catalytic hydrogenation. The first one, hydrogenation of alkene and alkyne. ठीक है, एल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजनेशन करना मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, राइट? सो एल्कीन जब आपके पास रहेगा, आप उसको H2 से रिएक्ट कराएंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज अ कैटलिस्ट. इट कैन बी आइदर निकल, और इट कैन बी पलेडियम, और इट कैन बी प्लैटिनम, कोई एक हो सकता है, और आपको यहाँ पे एल्केन मिलेगा. ठीक है, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जितना एल्कीन में कार्बन एटम्स है उतनी एल्केन में कार्बन एटम्स होंगे, एंड सेम, अगर रिंग है तो रिंग रहेगा, अगर रिंग नहीं है तो रिंग नहीं रहेगा. सिमिलरली इफ यू हैव एल्काइन, then यहाँ पे you have to use 2 moles of H2, and you can use either nickel or palladium or platinum, and you will get alkene with same number of carbon atoms. ठीक है, with same number of carbon atoms. अब ध्यान दीजिए जरा, if you have something like this, क्या ये alkene है या alkyne है? Tell me guys, बोलो भाई, alkene और alkyne, जल्दी. Alkene. डबल बॉन्ड तो कीन होगा ना, alkene है. How many hydrogen is Yes. required? How many hydrogen is 1. required in alkene? 1 mole of H2. एंड चूज अ कैटलिस्ट, निकल प्लेटियम प्लैटिनम में से कोई एक कैटलिस्ट चूज कीजिए. बोलो आके, नहीं बोलोगे तो याद नहीं Palladium. रहेगा. प्लेटियम, सर ठीक है. गले में दर्द है, ज्यादा नहीं बोल सकता। गले में दर्द हो गया आपके? क्यों? सर क्या थ्रोट हो गया? पेन। काहे भाई, क्यों हो रहा है लेकिन? पता नहीं, हो गया। तो गार्गलिंग कीजिए फिर, गार्गलिंग कीजिए, ठीक है. ख्याल रखिए यस सर। इस तरह से, गार्गलिंग वगैरह कीजिए, ठंड से बच के रहिए, स्वेटर वगैरह पहन लीजिए, ठीक है. ऑल्सो जो चीज सूट करती है आपको ना, वो चीज ज्यादा अभी अभी उसको ज्यादा कंज्यूम कीजिए, ठीक है. अब सिमिलरली इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये भी आपके पास क्या, दिस ऑल्सो एल्कीन, डबल बॉन्ड. आप इसमें भी डालिए H2 इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, प्लेटिनम देख सकते हैं, आपको एल्कीन मिल जाएगा, साइक्लिक एल्कीन. मेक सेंस? सुनो प्लीज टेल मी गाइस, बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir.
If it is alkyne, तो 2 moles of H2 in the presence of nickel, CH3 CH3. अब देखिएगा, अगर आपको ना ब्यूटेन बनाना है तो आप 2 एल्कीन यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज ब्यूट 2 इन, यू कैन यूज, सॉरी, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, दोनों ही यूज कर सकते हैं. इन दोनों को अगर, मतलब इनमें से किसी एक को भी H2 के साथ रिएक्ट करा के आप निकल एक पीडी किसी के साथ रख दें तो आपको क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ब्यूटेन. ठीक है. तो दीज टू आर आइसोमेरिक एल्कीन्स, जिससे हम क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, ब्यूटेन. ठीक है. ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन both can be used to prepare alkene. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा. Methane cannot be formed, or cannot be prepared by this method as alkene or alkyne at least has or have 2 carbon atoms. The smallest alkene that can be formed by this method is ethane, है ना. 2 कार्बन एटम वाला फॉर्म कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं फॉर्म हो सकता. Write this down. Raise your hand once you're done. Guys, raise your hand if you're done.
जल्दी लिखिए गाइस। रिश्ता आर यू डन? अच्छा ठीक है। So this is one method of preparation that we can use, है ना? Now, right, another method of preparation is from alkyl halides. ये नया टर्म हैलोअल्कीन, यानी कि if you have a halogen atom attached to carbon, तो उसको बोलते हैं alkyl halide, ठीक है? So, write the second method of preparation from alkyl halides. ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है RX, ठीक है? Now, in this we have two different methods of preparation. आपके पास A है Woods method, WURTZ, Woods reaction, and the second one is reduction of alkyl halide. Is reduction of alkyl halide. Now here write the first part A, Woods reaction. In Woods reaction what happens? ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? See here guys, don't write anything now please. देखिए इसको इधर स्क्रीन में देखिए. You will take haloalkanes such as RX, जहां पे X ना मेजरली इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बट मेजरली यू विल से क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली, ठीक है? क्लोरीन और ब्रोमीन ही देखिएगा, बिकॉज फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है और आयोडीन के साथ बहुत ज्यादा स्लो, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑप्टिमम. नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. इफ यू सी haloalkene reacting with sodium in the presence of dry ether. Now ether is a solvent, इसका कोई रिएक्शन में रोल नहीं है. We just need to show dry ether because it is not having any water. Because अगर पानी होगा और सोडियम होगा, then there will be a reaction between sodium and water. That is why we take the solvent dry ether. We don't take the solvent water. Then what happens? We get an alkene with double the number of carbon atoms. R मिलता है आपको प्लस NaX, ठीक है? ध्यान से देखिए, छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करें. प्लीज टर्न योर माइक ऑन गाइस, प्लीज टर्न योर माइक ऑन. या देखिए CH3Cl प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है? DE लिख देते हैं. Now CH3Cl is a haloalkane, yes or no, please tell me. Halogen atom, ठीक है? It is reacting with sodium, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? NaCl bonded to plus CH3CH3 नहीं, हाँ, CH3CH3 प्लस NaCl. आके आपने भी शायद यही कहा था ना, CH3 से अटैच होगा, राइट? सही है, ध्यान से देखिए. देखते रहिए अभी ऐसे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है? ध्यान दीजिए. इफ यू हैव टू कार्बन एटम्स एंड देन यू हैव Br प्लस सोडियम, अभी क्या मिलेगा आपको? कितने कार्बन एटम्स? एल्केन बनेगा. ऐसे बोलेंगे एल्केन बनेगा. यस सर. कितने कार्बन का? 2. डबल द नंबर ना, दो. डबल होगा ना इसका, यहाँ पे 2 है. ओके, सो हाँ, मेक सेंस. कितना आके? 4 कार्बन सर. 4 कार्बन का, ठीक है? देखिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी 4 कार्बन का आप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है? प्लस यू विल राइट NaBr, ठीक है? ध्यान दीजिए, 4 कार्बन का बने, कोई दिक्कत की बात नहीं. अब बताइए एल्केन बनेगा. अरे बोलो भाई, कितने कार्बन का? यस सर. 6. नहीं बनेगा क्या? बनेगा 6. हाँ, कितने कार्बन का? 1 2 3 का डबल 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6. अभी तक सब कुछ आसान है, बट अब देखो इस वाले सवाल को देखो. प्लस सोडियम, अब भी आपके पास एल्कीन बनेगा, है ना? और अभी भी 1 2 3 कार्बन है, तो कितने कार्बन का बनेगा एल्कीन? कितने कार्बन का बनेगा? 6 कार्बन का. बट जो एल्कीन 6 कार्बन का बनेगा, दैट विल नॉट बी सिमिलर टू द वन वी हैव मेड राइट. ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन ऐसे होती है.
आपने इस कंपाउंड को दोबारा लिखना है। अल्फा कार्बन याद है आप लोग? अल्फा कार्बन नाम सुना आपने? अल्फा कार्बन, No, अल्फा। sir. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एटम कौन सा यहाँ पे बताइए तो इस कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है कोई? है ना, एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी होता है फंक्शनल ग्रुप, बी आर। सही है? Yeah, yes, sir. बी आर जिससे अटैच हो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक? मेक सेंस? है ना? Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप, Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल कंपाउंड, वो जिससे जिस कार्बन से अटैच हो जाए दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, ठीक है? अब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फेस द अल्फा कार्बन अगेंस्ट ईच अदर। दो बार इस मॉलिक्यूल को बनाइएगा, ठीक है? इस तरह से बनाया आपने, यू विल मेक दिस मॉलिक्यूल ट्वाइस। और बी आर को बस हम यहां रख देते ताकि दीज टू अल्फा कार्बन दे फेस ईच अदर। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में Yes, आ Yes, रही sir. है? sir. अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है देखिए, अब बी आर हटा दीजिए यहां से और इसको बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए जैसे हमने बनाया हुआ है, ठीक है? बी आर हटा देना दोनों से और अल्फा कार्बन को ज्वाइन कर देना, ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है? प्लस NaBr, वो तो रहेगा, प्लस NaBr। अब ये दिखने में आपको बहुत वियर्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है ना? अभी ऐसा लग रहा है क्या ही है सर, चारपाई बना दिया है सर आपने, ठीक है? देखिए इसको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। आप स्टार्ट कीजिए एक टर्मिनल कार्बन से, जाइए। नाउ टेल मी, शुड आई गो डाउन, नीचे ज्यादा कार्बन है या राइट साइड ज्यादा कार्बन है? Right नीचे. side. अरे तो नीचे नीचे, नीचे. नीचे ना भाई ऋषिता, यार तुम ऐसे क्यों जवाब दे रही हो यार आजकल? क्या हो गया आपको? नीचे, sir. अरे हाँ ठीक है, बट व्हाट हैज हैपेंड? आप एकदम ऐसे अब्रप्टली जवाब देते तो गलत ही निकलता आपसे। तो आप सोच के जवाब देंगे, I है ना? thought, yes, sir. क्या थॉट, टेल मी। I thought we were going the other way, like the left side of it. It's hard to explain, so yeah, that part. इट्स हार्ड ठीक है, अब कहाँ जाए, राइट या लेफ्ट? किधर Any भी side, चलेगा, sir, it'll be the एनी same. साइड, है ना? Yeah. ठीक है, तो कहीं भी चल जाइए आप। अब देखिए ये जो आपने ये कवर किया ना, ये आपका मेन कार्बन चेन हो जाएगा। कितने कार्बन का हो गया ये बताइए जरा? एक, दो, तीन, चार, है ना? तो चार कार्बन को आपने Yes, ऐसे sir. बना देना है, ऐसे खूबसूरत लगता है ना? अच्छा ये एक है, सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप ये वाला, और थर्ड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप ये वाला। अब ठीक लग रहा है आप लोगों को? Yes, sir. मेक सेंस? ये सोनो प्लीज टेल मी। हर्षिता, Yes, sir. Yes. हो पाएगा? ऐसे सवाल हो जाएंगे। देखिए उसी तरह से आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, Br प्लस Na, ठीक है? चलिए छापिए जरा, रेज योर हैंड वंस डन। आपको इतना समझ में आना चाहिए दैट दो मॉलिक्यूल यूज हो गए हैं ना, अल्केन हाइड के ना, दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं एंड तभी तो ये बैलेंस होगा ना रिएक्शन। और यहाँ पे आपको इसके भी दो यूज हो जाएंगे और यू विल गेट 2NaX। When two molecules of alkyl halide reacts with sodium in the presence of dry ether, it gives an alkane with double the number of carbon atoms.
Please raise your hand once you're done. ऋषिता, ऋषिता, Yes, sir. संडे को तो बहुत बड़ा अपसेट हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत जल्दी भूल गए, तब तो आप बहुत सही है फिर तो। फाइनल था ना? Sunday? है, आपको पता नहीं फाइनल हो गया वर्ल्ड कप का? Oh, whoa, yeah, yeah. Yes, sir. Everyone cried. हमको लगा अच्छा सही है, आप मतलब अच्छा ठीक है, सही है, फाइन, सही सही है। आप भूल गए थे यानी? No, I thought you were talking about some exams. सम एग्जाम्स? ओ, क्या एग्जाम? Yeah, अब क्या yeah. ही एग्जाम? The like they put the good batsman at the starting. They shouldn't have done that. No, I think batting lineup was the same only. They did not change the batting lineup. Batting lineup was, I think, similar. There was I some mean, change or what? I don't remember. I think Jadeja came before Surya Kumar Yadav. I think that was the only change. Otherwise, everything was same. Although Sky did not perform any, कहीं भी उसने perform नहीं किया. The only thing which was new was the bowling lineup. Bumrah and Siraj used to start, but in the final, Shami started with Bumrah. That was different. yes, sir. I think it was just not India's day. Yes, sir. Hmm. And the like the ball, the when they threw the overs also weren't that good. We only got 80 in the first 1 to 10 overs, and Yeah, we significantly decreased. yeah, I think, and then we got like another 80 in 35 or 40 overs. Like we were 160, 170 in 40th over. So it was, Yeah, I mean, we made for the two, first 1 to 10 overs, we had 80, and like 10 to 20 and 20 to 30 together, we got 80. हाँ, 30 also. No, I think it exceeded 30 also. 30 over maybe, I think it was not 160. It was like Mm. 35 more than it was. Batting, I don't know, it became very different. But Australia had plan for each of the player, like what balls to give to Virat Yes. Kohli, what balls they should give to Surya Kumar Yadav. They came completely prepared. India, I think India was like, we will play as we are playing, and that was also good. They were playing really nice. They beat and everyone. But वो ऑस्ट्रेलिया वैसा नहीं है, वो जो बच्चा, यार हम कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, यार हम फेल हो जाएंगे, और फिर रिजल्ट जब आता है तो टॉप Yes, कर sir. जाता है। इट वाज लाइक दैट। आकिब, हो गया आपका? आकिब, आर यू डन? Yes, sir. यस, ओके। Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ऋषिता, आई एम वेटिंग फॉर आमना और खदीजा। तो यार आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू आमना। आमना यूजुअली यूज टू आंसर। आमना, अगर आप ना लर्नियो में अगर मैसेजेस भेज रहे हैं तो प्लीज सेंड इट टू सालिम। आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा। सेम फॉर खदीजा ऑल्सो। ठीक है। नाउ वी विल राइट अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द वुड्स रिएक्शन। प्लीज राइट। When two molecules of haloalkane reacts with
sodium in the presence of reacts with sodium in the presence of dry ether, it forms an alkane with twice the number of carbon atoms. With twice the number of carbon atoms. ठीक है. Now another few points. देखिए, no matter what type of haloalkane you take, आप एक कार्बन का ले लिए, 2 कार्बन का ले लिए, 3 कार्बन का, डबल कीजिएगा तो you will get alkene with even number of carbon atoms always, है ना. So please write, it cannot be this type of this method, it cannot be used for preparation of alkenes with odd number of carbons. Alkenes with odd number of carbons. Next, the methane cannot be prepared. है, मीथेन हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन है उसमें, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this method. Also, smallest ethane is the smallest alkane that can be prepared by this method. लिखे प्लीज रेज योर हैंड. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को समझाना है. Rishita, let me know once you're done. देखिए, how many molecules of haloalkene can be, we have to react, tell me. कितने molecules react करने पड़ते हैं Woods reaction में? Two molecules. 2. ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल का कॉम्बाइन करके हमको प्रोडक्ट मिलता है, राइट. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स है. Yes, sir. क्या होगा अगर हम 2 मॉलिक्यूल अलग अलग ले लें. इफ आई टेक CH3Br एक मॉलिक्यूल, और जनरली क्या लेते हैं, 2 सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3Br. अगर हम एक ऐसा ले लें CH3CH2Br, ठीक है, एंड वी रिएक्ट दिस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. ठीक है. अच्छा, when I'm saying I take 1 molecule of CH3Br, तो क्या सिर्फ एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन ऑफ Br, बस यही एक होगा, और इट विल बी अ सैंपल इन विच देयर विल बी मिलियंस ऑफ CH3Br. क्या ख्याल है गाइस? टेल मी. Millions. मिलियंस ना, रिएक्शन जब होगा तब तो मिलियंस ऑफ CH3Br होंगे. अच्छा, Yes, sir. नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई टेक दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ना, तो क्या होगा, देयर विल बी सम CH3Br which will not even collide with the CH3CH2Br, है ना. ये आपके पास ब्रोमोमीथेन है, ये आपके पास ब्रोमोइथेन है. There will be many bromomethane which will never collide with, which will never even see bromoethane, और वो अपने आप से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH3CH3 बना देंगे. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. Similarly, there will be a few CH3CH2Br bromoethane which will react with themselves and form ब्यूटेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स. करेक्ट है? सही. अरे बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है.
नाउ देर विल बी अ फ्यू जिसमें CH3 एंड Br दीज टू विल रिएक्ट विद ईच अदर, और फिर आपको एक 3 कार्बन का क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए, एक रिएक्शन से ही हमको 3 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, लास्ट वाला सही नहीं है भाई, क्या, oh my God, my God। ठीक है, 3 कार्बन एटम को मिल जाएगा CH3CH2Br। ठीक है, अब बताइए, एक ही रिएक्शन से 3 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इट इज अ गुड मेथड और अ बैड मेथड, क्या ख्याल है? Good method. गुड। आकिब, आपका क्या ख्याल है? Bad. वाई बैड? Don't ऐसी know. ऐसी ठीक है। देखिए, इंट्यूटिवली तो लगता यही है कि इट इज गुड ना, कि 3 3 चीजें मिल रही हैं, बट एक चीज जो मतलब इनिशियली ध्यान में नहीं आएगा आपके, कि ये तीनों एक ही आपको क्या कंटेनर में मिलेंगे, राइट? सही है ना, एक ही कंटेनर Oh, में so आपको we क्या, have to separate it. हाँ, सेपरेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जब भी मिक्सचर आएगा ना, तो मिक्सचर इज नेवर गुड। ठीक है, सो इट विल बी अ मिक्सचर, अलग अलग तो आ ही नहीं सकता है, बिकॉज वो सोल्यूशन में ही आपने, सोल्यूशन में तो ये दोनों चीजें डाली है ना, या आपने ये दोनों डाला और ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब ऑल ऑफ दीज विल बी वेरी हॉट, दे विल बी मिक्सड अप, और इनका सेपरेशन भी मुश्किल मुश्किल होगा, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर मास में भी बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास से फर्क नहीं होता है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट अभी हम लोग ने नहीं देखा है, बट मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो। ठीक है, सो इसके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी सेम रहेंगे, प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, तो इनको डिफिकल्ट, सॉरी, सेपरेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज राइट, दिस विल बी अ मिक्सचर दैट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, दैट इज वाई वुड्स रिएक्शन शुड नॉट बी डन यूजिंग 2 डिफरेंट एल्केन्स। ठीक है, प्लीज राइट। Two different haloalkane should not be used in Woods reaction, as it would lead to formation of a mixture of alkanes difficult to separate। ठीक है, चलिए, इसी बात पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। We will look at some more methods of preparation in the next class। ठीक है, next class में we will look at methods of preparation, also we will look at chemical properties, chemical physical दोनों properties। ठीक है, write this down। आज आपका असेसमेंट नहीं है, क्योंकि कोई एक टॉपिक खत्म नहीं हो पाया। The next class we will have assessment। हो गया गाइस, ओके Last डन। parts. भाई प्लीज रिवाइज कर लेना आज जो कुछ भी कराया हमने, ठीक है रिशिता, आखिर, Yes, sir. ठीक है, तुरंत तुरंत रिवाइज कीजिए, तभी जाके ये दिमाग में रहेगा, अदरवाइज इतनी उड़ जाएगी चीजें। ठीक है, ऐसे भी बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बहुत ही वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जानते हैं, और से वॉलेटाइल, Flammable. फ्लेमेबल तो अलग चीज हो गया रे भाई, वॉलेटाइल और मतलब होता है आसानी से उड़ जाने वाली चीज है। ठीक हाँ. है, जैसे इथेनॉल, जैसे आपका ये होता है क्या